Good evening, everyone. It's a great delight to welcome you all for this event. Adhanya Timirahasya Ganyana Anjana Shalakya Chakshuhu Unnititam Yanam Tasmai Shri Gaurava Nama. This is a shlok from Bhagavad Gita, which means that a guru can save us from the pangs of ignorance and create awareness for the universe. And I salute such a guru. The shlok was recited to define the current scenario where our guru, our own Prakash sir, is actually creating awareness for the CIMA course which will enlighten our life for the years to come. Let me introduce myself. I am Kirti Saxena, who is associated with Saraf Gurukul since my operational level. Initially, like everyone, I was uncertain about the course and was clueless about my success at the end. But with the confidence of Prakash sir and Vidisha ma'am, I am today a management accountant, and they were the ones who were the support pillars for churning me from a graduate to a management accountant. Currently, I am working as a business analyst with ICRA Techno Analytics and serving British Petroleum as my client. It's actually a delight to say that I completed the CIMA course in 2 years and each of them in a single attempt. This would not have been possible if they were not there with me in the entire journey. And the best part to share is that in 1.5 years, I am the team lead of the same team which recruited me as a backup resource 1.5 years back. This actually calls for applause, not for me, but yes, for the awareness that the CIMA program gave me. Well, the best part is that in British Petroleum I come across a lot of management accountants who are actually aware of the relevance and the importance of the CIMA program. When they actually came to know that I am a pass-out management accountant, they had uplifted me to promotion, and then they even gave me the responsibility to assign short-term strategies for the company. And the best part, what they told me is that even if we are having a global recession where people are losing out on good job opportunities, the management accountants will be the one who will be having the jobs. I asked them the reason. They told me that in the crucial stage, the blue chip companies and industries will be looking forward to us to define cost driving strategies, which is not possible in the other courses or the MBA programs. This is how actually the blue chip companies look towards us, and yes, most of them say that in our organization we actually have a group of CIMAs who are there in all the departments and across all the globe. And guys, this is what I have shared from my own experience, from my own knowledge, and it's a delight to share the same with you so that you can follow the same footprints and be there in the limelight where all of us would be now in next years to come. Now, I would take the honor to introduce the distinguished guest we have with us today. It's an honor to introduce Mr. Debashish Biswas, the country head for CIMA India, and would request Vidisha ma'am to welcome him. Thank you so much, sir, for making to this event. Now, we have Mr. I.M. Mahapatra, who is the National Head for Academic Relations for CIMA India, and would request Vidisha ma'am to welcome him. We would thank you, our guests, for the support throughout the event and for taking our time for the busy schedule. Now, I would request Mr. Debashish Biswas to enlighten the students with his thoughts.
Can I sit and talk? That's fine. This is better. Because there's something which is going on. This is more important than me because that's the organization I represent. So I don't want to stand between the organization and you. Okay? So, the other thing is that I've been standing the whole day for out of the whole day since morning, I've been standing for 5 hours and I've been very, very tired. So I came and I was... all of you are from Calcutta? Yeah. So today I traveled almost about 150 kilometers within Calcutta. I'm from Calcutta also, but I stay in Mumbai. One thing which is very, very important, and today's event is around that, is when I look at you and I look at what both Prakash and Vidisha has created jointly in terms of having the CIMA course and management accounting been spread across the length and breadth of Kolkata, and also the young and vibrant girl who came and spoke about completing CIMA course in 2 years' time. What is very, very important is the fact that they're sitting in Dalhousie, sitting in something which is very close to the central business district of Calcutta. I don't think many people in this area, a lot of offices are here. I don't think they're aware that on a Saturday evening this is happening out here. And actually, if you walk out from this room, I don't know what level you are in. You could be at a operational level or a strategic level, or maybe you have just started off with certificate level. If you just go ahead and each one of you enter one company between Chaurangi to the entire of BB Dibag Dalhousie, each one of your presence can make a remarkable difference to the functioning of that organization. And that's what the strength and power of CIMA lies in. Because the way you would think, the way somebody who's studying CIMA or somebody who's taken up management accounting if you're pursuing management accounting as a course, your thought process changes. And please understand why I'm saying this is because when you look at what is that which you study and you look at your curriculum, and I see in somebody's table a syllabus being there and the pillars are there, the 3 pillars are there, right? You can see the 3 pillars. So how many of you all are students here who are, all of you, most of you? Okay. And how many of you all are coming here to see what's happening and you feel excited about it and stuff like that? You're coming here for the first time or you're hearing for management accounting for the first time? Can I see your hands, please? Okay. See, even if you've come here to listen to what is that which this is all about, I think you have taken a conscious choice, you have made a conscious decision only because of the fact that you wanted to understand that what could be so different from the conventional education courses being offered in India. You know, you have so many courses which are offered by the UGC affiliated bodies, and if you look at the undergraduate level, so many degree programs are going on, postgraduate degree programs and all. There are a huge number of it. If you look at it, the specializations under undergraduate would go into hundreds. And if you choose engineering, there would be about X number of specializations under that. Under the area of management, there would be X number of specializations. Now, what do you do? Now, one of the key things which differentiates, and when I was a little bit trying to prepare myself for today evening, and I was studying, and I just did some amount of Google search today morning, and I was trying to understand how management accountants differentiate themselves from rest of those who are not management accountants. What is that which they have to say about themselves, right? And one thing which came out very, very vividly is they see themselves as somebody who helps in seeing any business, any organization, any function end to end. You know what is end to end? You know, from the start to the end, from the beginning to the end. It's not a very easy task, right? How many of you all are from, you all are aware about Mango Lane and what happens around Mango Lane? You all are aware of Dalhousie? How many of you all are pretty familiar with this place? Can I just see your hands?
Those who are familiar with this place? Just 5 or 6 of you all? Means the others just come in, study and go back. I mean, because generally, Prakash, there are 3, people who, three things which wakes up in the morning. Okay? You will see the birds, the sun and Prakash Saraf. More or less all 3 of them wake up at the same time. Okay? Oh, is it? Okay. So what happens is, for those who are not students out here, please understand what it means is, this man who's sitting there, the second person from the left, and for you the third person from the right, is a person who's so committed and dedicated to his passion. I'm not saying his profession, because if you're not passionate about what you're doing, it doesn't make much of a difference. Is so passionate about what is that which he does, is that he devotes so many hours into doing it. Trust me, if you are not feeling very, very excited about something, you will do it 1 or 2 days. You will not do it every day. Right? And his passion stems from the fact that he wants to make that difference, he wants to create that difference in lives of people like you. And you are the future of this country. You are the one who's going to help redefine what India is going to be tomorrow. And if we are not serious, and when we say we are talking about we are talking about the organization, could be chartered accountant, the communities of all accounting professions which are there. You have chartered accountants, cost accountants, you have management accountants, you have company secretaries. There are a lot of people doing a lot of good things. But when you look at management accounting, what we are very clear to you is what is that which we would like to do, which helps you understand everything end to end. And for those who may not be that much familiar, wherever you stay, in whichever location you stay, you would see there would be some business establishment, or if your parents are working somewhere, you would know that they work for an X or Y organization, okay, or an institution, or could be a school, or could be an office, or could be some company. It's very difficult for one person to have a very holistic view about the entire scheme of things what happens in an organization. You tend to get specialized. You either know one part of it, or you know the second part of it, or third part of it, right? It's very difficult to know all part of it. This girl who's sitting here, and the one who said that because they came to know that I am a management accountant, they gave me an added responsibility. Now, just knowing that I am a doctor, patients will not come to me. Why would patients come to me? Just because I hold an MBBS degree? No. Just because of the fact that management accountants and management accounting as a profession has gained so much respect and so much recognition worldwide, that if you have crossed that barrier and been regarded as a qualified management accountant, people would not much bat an eyelid, but to trust you with certain responsibilities and certain senior level opportunities and growth opportunities. That's what makes the difference. There can't be anybody sitting in this room who doesn't aspire to do well in life. There is nobody sitting in this room who wants to remain wherever you are today. You want to remain there for the next 10 years. I don't think there's anybody sitting in this room who wants to conclude your life, your work life, or retire from work, maybe from business or from service, the way you have seen people in your family retire. Maybe you want to do better than that. Interestingly, your parents also want you to do better than them, isn't it? All parents are very, very proud of that. Now, when you know these aspects, then you have to understand that you have to possibly look out, and what can you do? If I talk about a generation where people used to, and I don't think you are exposed to that, but there were times which would be about 20, 30 years back, where in this same place, Dalhousie, there's something called Writers Building, okay? Now the headquarters are shifted to Navanna, which is somewhere slightly different, but that red building still remains. And around that, there used to be a lot of vendors selling examination forms and admission forms of various competitive exams, right? There used to be loads, it's still there. Okay, and you will see staff selection commission has X number of things happening, you know, and then there are X number of courses to be done. There is so much to do, so much to study. What do? You wish to continue studying till 28, 30, 35, 40 years of age?
maybe typically, we'll end up studying till about 27, 28, if you want to do really good higher studies and all. Or you really, if you're a smart person, and this is in the age of, in the modern age where people are looking at optimizing resources and optimizing usage of your time, right? Accepting the fact that the amount of time you spend on Facebook and on WhatsApp, all other times, whatever's left of it during 24 hours, you would like to make best use of it. And if you want to make best use of it, the ideal way to look at it is possibly looking at something which within a span of about 2 to 3 years helps you gets you equipped with something which will help you throughout your life in whichever profession you are. Be it whether you want to join a job, whether you want to start your own business, or whether you start doing a job and then quit it and want to do your own business. You need to understand how things operate. You understand what I'm trying to say? If you look at many people out there, you know what, there are some people who do. There's a place called, we're just going to discuss that. It's a very interesting example. There's a place called Kakati downstairs. You have heard of that? So if you look at that particular shop, or look at any other shop which is doing well for themselves, any tea stall, you go to the one which is next to the Gurdwara in Bhawanipur and all, you will see there would be a lot of people doing different things. And I took an example which is a colloquial example, something which you're used to seeing in your locality. But you'll see there's 1 or 2 people who understands entirely how the business operates, starting from what time you need to open your shop, till what is that which needs to be the raw material supply, till the fact as to what is customer satisfaction, what should be the end product pricing, when do you shut your shop, and how do you do things. A couple of people are there who understands the entire business, right? It's not an easy task, but it is an easy task if you equip yourself and you train yourself. For all those who are going to get recognized and rewarded today, I think it's a very, very important day, because for us, Saraf Gurukul is one of those amongst all in India who's been doing incredibly well in the field of partnering with CIMA and taking it forward. Personally, if you ask me, both of them, Prakash as well as Vidis, are so committed and so dedicated to the cause of furthering the cause of your future and trying to address and equip you and to make you one of the best in class in terms of whatever you are studying. It's something which is not generally seen. Because there would be so many coaching classes across the place, right? I'm sure you have gone through so many coaching classes. You may have gone to some of it, you may not have gone through it. Is it okay with English? Should I mix it up with some other language? I'm okay with everything. Hindi bhi theek hai and Bangla to it's fine. Okay. So, or am I speaking too fast? Because it's fine, right? It's okay, yeah. So, given the size of the room, I've just kept the decibel level also proper, so that it doesn't seem to be too loud. So, if you look at so many, if one way looking at Saraf Gurukul could be standing outside 5 Mango Lane and looking at it as one more coaching class. One way of looking at it could be that there are people out here who's going to help redefine your prospects and your career in life and give it a proper direction. One way of looking at it also is, this is a destination for you to possibly make a new beginning to your life. Whatever are your aspirations, whatever are your dreams, whatever is that which you want to be in life, this could be a destination which is not merely then a address. This is not merely then just one more postal code or one more name of a street or a road or a lane. You need to decide what is that which you need to do. Frankly enough, traditionally, historically, the two brothers are regarded and respected very, very highly for what they bring to the table when it comes to anything which has got to do with financial management or financial, finance-related courses. They're very, very highly regarded for that. Okay, so you have that added advantage. Now you have to decide that on one hand you have a qualification which, instead of you running around and pursuing graduation and a post-graduation and then get into a possibly some specialized courses and do some MPhil and
do so many things, because every course looks to be very, very attractive. And I'm not trying to tell you that, CIMA is the best course. It all depends on what comes from experience. Somebody who spoke is speaking from experience. There are others who would be speaking more from their experience. But at the end of the day, you have to decide that what is that which you want to do with your life and how soon. Because you have X number of years ahead of you. Please understand, when we were at your age, we still had some amount of bandwidth because competition was not this fierce. We had opportunities, be it a job market, be it starting our own business. It was much more easier 25, 30 years back, right? I think 20 years back. I'm not that old. Okay. So because when I calculated 30, I said, okay, it takes me back to school. So it was still much better than what it is now. For every position in an organization, there are not hundreds but thousands of applicants. Right? What do you do? How do you differentiate yourself? क्या है आप में जो आपको बाकियों से हटके present करेगा? What is that which is there, which creates that separate pitch for you? You have to decide, and in the minimal time. You cannot be pursuing a course for 10 years and then decide that, okay, you want to do, because there are courses which will give you that much of time. You can pursue something which might take 5, 6, 7 years, but you might lose out extra 3, 4 years of your life trying to learn something which otherwise you could do in 2 years' time. And if you want to really, really check it out, you should go and check it out and do your due diligence, because there's no better library to check it out than Google. Do your due diligence, please do your validation. So if you have on one hand something which is a qualification which helps you do so well, and on the other hand you have an institution, an organization, or something which is called a destination like Saraf Gurukul, which are regarded and respected for what they do, possibly you can't have a better combination. Choice is yours, because future is yours. Decide wisely. That's all that I wanted to say. Thank you very much. Thank you so much, sir, on your knowledge and your insights on the business growth and industry. It means a lot to us all. Well, sir has already shared more about the institute and about Prakash, sir, and Vidisha, ma'am. But still, some of it is that they started their journey around 5 years back, and it's a journey which started with 2 students, and now we have 200 plus students across the world. They have kept reinventing itself in all the years with the help of technology and have taken their classes global. With the help of direct-to-home classes, students can access the classes anywhere, sitting right in their homes. They offer the classes via 3 delivery modes, which is face-to-face, online platform, and offline platform. See, we even have options and the versatility which we have over here. Our student base is now spread across all the cities of the world and all the continents of the globe. It feels great to say that Saraf Gurukul has been consistently delivering pass rates about 90% across all levels and has been producing global and national rank holders term after term. However, year 14 was extremely special, as Saraf Gurukul created history by producing 27 rank holders. This calls for an applause. Many of our rank holders are direct-to-home students and hence could not be present today. Before we start with the felicitation of students present here, I would like to announce all our rank holders who made us proud. We have Sushant Chaudhary from Bangalore, working as a financial analyst in Hindustan Unilever, who got a global 6th rank in Masters Gateway and an All India rank 1 in Masters Gateway. Next in line we have Jinsen Stefan, staying in Bangalore, working as a manager in accounts and finance in Inversion Limited, who got an All India rank 5th from Management Gateway. We have Nazim Said from Chennai,
got an All India rank 9th for performance operations working as a financial controller in Financial Express. We have Piyush Agarwal staying in Bangalore, working as a finance manager in Origami India, who got an All India 4th rank for performance strategy. We have Girish Kumar, who is staying in Nasik, working in Bosco India Limited, who got an All India 3rd rank for top CIMA level. We have Krishna Khandei, staying in Bangalore, getting an All India rank of 7th for performance management. Arnav Chokhani, staying in Kolkata, got an All India 2nd rank for enterprise operations. We have Deblina Mandal, who is staying in United States, who got a rank 1 for E1 and rank 2 in Masters Gateway, working as a senior associate in KPMG USA. We have Mohit Jaria, staying in Kolkata, who got an All India rank 8th rank for enterprise operations and All India 5th rank for performance operations. Now I would request Sir to felicitate the students who have come here. What is that? Okay, we have Mohit Jaria for us. Sir, please facilitate the students. Okay. Mohit Jaria has been awarded All India 8th rank for enterprise operations and an All India 5th rank for performance operations. We have Vishaka Jawar from Kolkata, who got an All India 1st rank for enterprise operations, All India 8th rank for financial operations, and All India 9th rank for performance operations. Next we have Khushbu Mundra from Kolkata, got an All India 3rd rank for enterprise operations, All India 1st rank for financial operations, and All India 1st rank for performance operations. Then we have Pooja Baheti from Kolkata, getting an All India 4th rank for enterprise operations. We have Yachna Chamaria in Kolkata, getting an All India 3rd rank for financial operations, All India 3rd rank for performance operations, and All India 10th rank for enterprise operations. We have Mohammad Zohad Khan, who was an All India rank holder for Top CIMA, who is working as Deputy Manager Commercials in Nekla Russell India Limited. Yeah. Then I am on the list who got an award for qualifying CIMA in first attempt. Thank you, sir. Done. Thank you so much for felicitating the students.
Now I would call our own Prakash sir to discuss more on the CIMA program and enlighten the students with his thoughts. नाउ अवार्ड लेते वक्त या देते वक्त जो भी बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली ये कौन सा सब्जेक्ट का अवार्ड है, मेरे को ऐसा लग रहा है. बट द रीजन इज दैट क्योंकि सर को जल्दी निकलना है, तो आई वांट टू माने स्टूडेंट को अवार्ड उनके हाथ से मिले, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने पहले अरेंजमेंट किया. अदरवाइज दिस वुड हैव बीन डन एट द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अलग अलग सब्जेक्ट्स क्या क्या है सीमा में. आई विल नॉट टेक बिकॉज टाइम कम है. I will be saying maximum 20 to 30 minutes to go around कि सीमा क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि सपोज इफ आई एम एट योर स्टेज, मे बी आई एम नॉट आस्किंग कि कौन कौन क्या पढ़ रहा है, किस लेवल पे है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट क्राउड्स हियर. कोई लोग केवल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कोई लोग सीए इंटर पास है, सीए फाइनल बाकी है, कोई का सीए हो चुका है, सीएमए हो चुका है. सो देयर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट सिटिंग हियर. आई एम टेकिंग माई सेल्फ कि मैं उन सब में से कोई एक हूं. अगर मैं ग्रेजुएट हूं तो मेरे को आगे क्या करना चाहिए, व्हाट अपॉर्चुनिटीज आई विल बी गेटिंग बाय डूइंग सीमा. इफ आई एम अ सीए क्वालिफाइड, आई एम अ सीएमए मेंबर, देन व्हाट आई शुड बी डूइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थिंक अबाउट द इंस्टीट्यूट, व्हाट इज सीमा इंस्टीट्यूट. कोई भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं. सो आई थिंक वी आर टीचिंग सीमा फॉर द लास्ट 5 years and I am also teaching all the Indian courses also, the particular subject in which I specialize. But when I am teaching CIMA, I always differentiate CIMA with other courses कि क्या CIMA में है और क्या दूसरे courses में नहीं है. And what is the recognition of CIMA? जिनको पता है they know it's a very good thing. जिनको नहीं मालूम है, कोई लोग ऐसा ही बोलते हैं CIMA कोई लड़की का नाम है क्या. स्टूडेंट मेरा खुद बोलता है भैया आज CIMA से मिलना है, बहुत सारे ऐसा बोलते हैं. लेकिन इट्स अ प्योरली, अभी 2015 में भी जो कोर्स में चेंजेस आया है, इट्स एक्सेप्शनल, माइंड ब्लोइंग सिलेबस है. अपने जब पढ़ेंगे कोई भी टाइम पे ऐसा नहीं लगता है, ये नहीं बोलूंगा कि 100%, बट 10-15% को छोड़कर कोई भी एक पोर्शन में यू डोंट फील दैट कि यू शुड, व्हाई यू आर स्टडिंग, क्या फायदा है, अपने को क्यों पढ़ाया जा रहा है, या एक बिजनेस में इसका क्या हेल्प है, ऐसा कभी आपको नहीं लगेगा. The CIMA Institute is the oldest institute, one of the oldest institute in the history regarding commerce. The institute established 1919 and it's now 2019, 100 years institute hai. The examinations and are conducted in 180 countries and the students, the members are spread out all over the world. जो CIMA Institute है, उनका ये सोचना है कि आप जब डिग्री लेंगे, कोर्स करेंगे, तो यू शुड बी गेटिंग अपॉर्चुनिटीज इन कॉर्पोरेट्स, कि आपको जॉब मिले, या आप अपना बिजनेस भी अगर कर रहे हैं तो आपको बिजनेस को और ग्रो करने में हेल्प हो. ये इंस्टीट्यूट सोचता है. सो दे ऑलवेज चेंज इन द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स. अभी जो रिसेंटली 2015 में नया सिलेबस आया है, इंस्टीट्यूट ने मोर देन 100 कॉर्पोरेट्स, टॉप कॉर्पोरेट्स ऑफ द वर्ल्ड का सर्च किया और इंस्टीट्यूट ने कॉर्पोरेट्स के साथ ये डिस्कशन किया कि व्हाट यू वांट इन ए कैंडिडेट, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई आता है आप उससे क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट दैट. बिकॉज इफ आई हैव अ डिग्री, इट इज नॉट दैट आई विल बी गेटिंग मनी फ्रॉम द कॉर्पोरेट. टू गेट मनी आई हैव टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न मनी. अगर मैं भी किसी को रखूंगा तो मैं भी मन में तो यही सोचूंगा ना कि मेरे को भी ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे ग्रो करे. तो हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करेंगे, आप उसको हेल्प करें और ग्रो करने में, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द जॉब. नाउ द सीमा सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. आई एम नॉट सेइंग सब्जेक्ट्स में मैं आ रहा हूं. टोटल सिलेबस में 17 पेपर्स है.
उसमें से 12 पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दोज आर नॉट एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और बैलेंस जो है 3 माने आउट ऑफ 17, 14 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड बैलेंस 3 पेपर्स आर केस स्टडीज. नाउ व्हाट, व्हाई द ब्लेंड इज देयर? मान लीजिए इफ सिंस वी आर ऑल बिलोंगिंग टू जनरली इंडियन कोर्सेज के बारे में सुने आपने, तो कोई भी इंडियन कोर्स का एग्जाम्पल लेंगे. सपोज आई एम स्टडिंग लॉ, तो मेरे को लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट, अलग अलग चीज पढ़नी है. मैंने पढ़ा, एग्जाम दिया. जब अपने एग्जाम देते हैं, पास हो गए बिकॉज वी स्टडीड हार्ड. मैंने सारा बुक अच्छे से पढ़ के गया, एग्जाम में पास, गड़बड़ होने का कोई टेंशन नहीं था. आई क्लियर द एग्जाम. बट वेन आई गो फॉर वर्किंग, जब मैं काम करने जाऊंगा, तो क्या मेरे को बुक में जो एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ था सेक्शन, वहां बताना है क्या? एग्जाम में मेरे को जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या कंपनी में जाके वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आप भी आंसर लिखिए उसका? इट्स नॉट लाइक दैट. प्रैक्टिकल लाइफ वैसा नहीं. अपने जो बुक में पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम आता नहीं है. सीमा ऐसा सोच रहे कि आपको वैसा चीज पढ़ाया जाए जिससे वो प्रैक्टिकल बिजनेस में काम आ सके. बी इट रेगुलेशन, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टेक्निकल, डिसीजन मेकिंग, हर चीजों को लेकर सिलेबस को बनाया गया है. और टू अप्लाई दैट नॉलेज इन द बिजनेस, कोई चीज को हम सीख लिए, उसको बिजनेस में कैसे इंप्लाई करना है, अप्लाई करना है, ये सीमा सिखाता है. यानी कि जो 14 पेपर्स है, आप ऐसा सोचिए वो आपको नॉलेज दे रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल लाइफ से क्या यूज है, करिकुलम क्या है. लेकिन उसके बाद जब केस स्टडी एग्जाम देंगे, देन इट्स प्योरली फेसिंग द प्रैक्टिकल लाइफ. आई एम सेइंग, सपोज आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सोच रही है कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लेके आना है या नए मार्केट को टारगेट करना है, कुछ अपने को नया करना है. डायरेक्टर्स लोग का मीटिंग हुआ, डायरेक्टर्स लोगों ने कुछ डिसीजन लिया कि ऐसा करें तो क्या होगा. ना जब डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा, दे आर ऑल not 100% sure. Managing director is saying this, CEO is saying this, sales manager is saying this. कोई भी अलग अलग डायरेक्टर का अलग अलग व्यूज है. You will be asked to give a light upon that. आपको हेल्प करना ऑर्गेनाइजेशन को, जो जो प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम हो रही है या जो डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है, वो हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो. दैट विल बी टॉट इन सीमा सिलेबस. यानी कि इट्स नॉट ओनली बुकिश. व्हेन यू गिव केस स्टडी एग्जाम इज प्योरली बेसिकली दे विल मेक यू दैट आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं. केस स्टडी विल बी गिवन टू यू 40 days बिफोर द एग्जाम. एवरीबडी विल हैव द नॉलेज ऑफ द केस स्टडी. एग्जाम में केस स्टडी क्या है, लेकिन वो केस स्टडीज के लिए दिया जा रहा है. आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वीक जनरली इंडक्शन होता है. आपको हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाता है, कंपनी कैसे फंक्शन करती है, क्या उसका रॉ मटेरियल है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, कौन कौन क्लाइंट्स है, हम लोग को ये नॉलेज दिया जाता है. और फिर उसके बाद इफ वी आर क्वालिफाइड, इफ वी हैव नॉलेज, देन इन दैट केस वी अप्लाई दैट नॉलेज. वी इंडक्शन ट्रेनिंग जो हुआ उसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करेंगे. जो जो चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, हम लोग वो चैलेंजेस को दूर करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को बेटर रेवेन्यू, बॉटम लाइन इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे. सीमा ये सिखाता है. मेरे को ऐसा लगता है फॉर द लास्ट 5 years आई एम टीचिंग सीमा, और मैंने ऐसा सीखा है कि कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. दैट इज बीइंग टॉट बाय सीमा. नॉट दैट ओनली अ बुकिश पोर्शन. ये जरूर है, पढ़ना जरूर पड़ेगा. इट्स नॉट दैट यू कैन पास विदाउट स्टडी. इफ यू स्टडी यू कैन पास. नॉट लाइक एनी अदर कोर्सेस कि सुबह से रात तक पढ़ाई कर रहे हैं, 16 घंटा 6 महीना पढ़े, फिर भी एग्जाम दे रहे, पता नहीं है पास होंगे कि नहीं. नॉर्मली you will be agree with me, because मैंने भी ऐसा पढ़ाई की है कि इतना पढ़ के भी कॉन्फिडेंस नहीं होता एग्जाम के टाइम पे कि एग्जाम दे छोड़ देते हैं. वैसा सीमा में नहीं होएगा. इफ यू स्टडी प्रॉपरली, देन इन दैट केस यू कैन पास एंड यू कैन गॉट द रिवॉर्ड. ये जो एक्चुअली जो डिक्टेशन माने जो भी चल रहा था कि ये स्टूडेंट है यहां से रैंक लाए हैं, दीज आर दोज हु गॉट रैंक, बट देयर आर मेनी जिनको रैंक नहीं मिला, स्टिल they cleared CIMA in first attempt and they are placed globally, not in India. It's a global qualification. It's not only related with India. अगर हमें ये लगता है, हम लोग, एक बात मेरे से सभी एग्री होंगे, पढ़ने के बाद फॉर द टाइम बीइंग कोलकाता में कोई फ्यूचर्स नहीं है.
दैट वी जनरली, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। तो अगर कोलकाता के बाहर जाना है, दिल्ली मुंबई जाना है, तो फिर इंडिया के बाहर क्या प्रॉब्लम है? वेनेवर आई मेट, कोई रिलेटिव से मिलते हैं, भाई हम तो अभी दुबई में हैं, सिंगापुर में हैं, जो पैसा मिलता है कोई टैक्स लगता नहीं है, पूरा का पूरा फ्री है, इंडिया में सारा लेके आओ, नो विथ होल्डिंग टैक्स, नथिंग। तो अगर अपनी सोचते हैं ग्लोबली, ग्लोबल के लिए यू हैव टू हैव अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। अगर ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, देन ओनली योर ग्लोबल पोर्टेबिलिटी विल इंक्रीज। सो इट्स, वी ऑलवेज से दैट सीमा इज अ पासपोर्ट फॉर अ ग्लोबल कैरियर। अगर आपको ग्लोबली अपने आप को प्लेस करना है, देन इन दैट केस सीमा इज वर्ल्ड रेनाउंड और माने डिग्री विच विल गिव यू दैट एज अराउंड द वर्ल्ड। अब एक मैंगो लेन में जॉब अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, बट we are not doing any such type of course to be doing job in a mango lane. मेरे को नहीं लगता है। इसलिए don't think in that way, and there are opportunities। और we are, माने always, जब से मैं पढ़ाता हूँ, कुछ लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे से वो लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं जो कोर्स से रिलेटेड नहीं होता है, एंड मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ मेरे को क्या मतलब है। आई ऑलवेज थिंक दैट कि इफ यू आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी, देन इन दैट केस वट एवर क्वेश्चंस यू हैव, I should be solving that if it's possible for me। कोई सीए पढ़ रहे तो वो भी ये पूछता है, भैया सीए पढ़ के क्या होएगा, जॉब मिलेगा कि नहीं, आजकल ऐसा खराब है, सभी कोई सभी बात करते हैं। आई ऑलवेज आंसर ऑल दोज क्वेरीज बिकॉज आई फील दैट कि वो मेरा भाई है या मेरा बच्चा है, मेरे को उसको ठीक करना है। वैसे ही हम लोग सीमा के बारे में सोचते हैं कि जब कोई सीमा करे उसको सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ ही मिले। मतलब उसको जॉब भी चाहिए, हम प्लेस कराएं, उसको इंटर्नशिप चाहिए, हम प्लेस कराएं, उसको जॉब चाहिए, हम उसको जॉब दिलवाएं। मतलब हर तरह से हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं। और गॉड ग्रेस हमारे पास सीमा इंस्टीट्यूट है साथ में, जो हमारे साथ हैंड टू हैंड, फुट टू फुट साथ में चलने के लिए रेडी है। नॉट ए सिंगल इंस्टीट्यूट जो हमारे साथ चलने के लिए रेडी है, एक्सेप्ट सीमा, कि आपको क्या चाहिए, वी आर हेल्पिंग। अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट को बुलाऊंगा, कोई यहां आने वाला नहीं है, एक्सेप्ट सीमा, कि दे आर टेकिंग देयर टाइम आउट, कमिंग हियर, शेयरिंग देयर थॉट्स विद द स्टूडेंट्स। एंड समझ लो हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, अभी क्या बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग दिस ओनली कि किस तरह से कोलकाता में इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट किया जाए। हम लोग यही बात कर रहे थे। यानी कि आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट जस्ट बाय डूइंग द कोर्स इज एवरीथिंग, वी हैव टू स्प्रेड दिस कि सीमा रिक्वायरमेंट और अराइज हो, इसका नॉलेज और बढ़े, लोगों में समझ पे आए कि व्हाट इज सीमा क्वालिफिकेशन। सो सीमा इज बेसिकली द इंस्टीट्यूट के ऊपर राइट ऑफ बहुत सारा है। अब कहीं से भी गूगल सर्च वगैरह, मैनेजमेंट लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, 100 years रिकॉग्नाइज्ड है, 4 डिग्री मिलती है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स कि सीमा कोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी कैन हेल्प टू द स्टूडेंट्स, एंड इफ दे चूज सीमा दे आर रेस्ट श्योर अबाउट देयर ग्लोबल पोर्टेबिलिटी। कि ग्लोबल कोर्स में अगर अकाउंटिंग, बिजनेस, फाइनेंस सब चीज को मिलाएं, देन इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स विच आई फील। दूसरे कोर्स और हो भी सकते हैं, बट आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स टू डू अवे। एंड देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स, जो कि मैं धीरे धीरे एक एक स्लाइड में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं कि कोर्स के अंदर क्या है, किसको क्या पे। बिकॉज इफ यू आर सिटिंग हियर एंड यू वांट टू नो अबाउट सीमा, यू वांट टू नो सीमा सिलेबस में क्या है, कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा, मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह है कि नहीं, और क्या हम पास करते हैं कि नहीं, पास कर सकते हैं कि नहीं। तो पास कर सकते हैं, ये बात बहुत हो गई मेरे ख्याल से, कि दैट्स डिक्टेटेड कि वी आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग मोर देन 90% रिजल्ट इन सीमा। तो दैट इफ यू आर रेडी टू स्टडी फॉर 2 to 3 hours ऑन रेगुलर बेसिस, बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अराउंड अबाउट 10 to 15 हु आर अराउंड 50 years of age, दे आर डूइंग सीमा। वो लोग खाली नहीं बैठे हैं, दे आर डूइंग जॉब, दे आर वर्किंग, बट स्टिल दे आर डूइंग सीमा। कुछ तो होगा जो उनको बोलता होगा, और वो मेरे से पूछ के सीमा ज्वाइन करने नहीं गए हैं, वो लोग तो पहले ज्वाइन कर लिए, देन दे कॉन्टेक्टेड अस फॉर क्लासेस। सो इट्स नॉट दैट आई एम ओनली डूइंग, बिकॉज द कोर्स इज विजिबल इतना है, इसकी जो माने मार्केटिंग है, जो प्रमोशन एंगल है, वो इतना ये लोग करते हैं जिससे कि लोगों को पता चलता है। कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप है, वो सब कॉर्पोरेट टाई अप वगैरह आंसर आप लोगों को बताएंगे। आई एम जस्ट पिचिंग ऑन 3-4 क्वेश्चंस, क्या क्या सब्जेक्ट के अंदर है, किसको क्या क्या फीस देना है, कितने दिन में कोर्स होगा। आई एम पिचिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, ठीक है।
ये शुरू का एक दो स्लाइड आंसर आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। एक मेन मैंने कुछ डिफरेंस निकाला है कि सीमा कोर्स विज़ अदर इंटरनेशनल कोर्सेस मेन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, अगर आप कोई भी इंटरनेशनल कोर्स करेंगे, इट इज नॉट एसेंशियल दैट एग्जाम विल बी इन कोलकाता, मे बी एग्जाम विल बी आउटसाइड कोलकाता, इवन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। अपने बगल में एग्जाम देने जाता हो तो दिल धक धक करता है, तो अगर कोलकाता के बाहर देने जाएंगे कितना धक धक करेगा, तो वो नहीं होता इसमें। और अभी तो ये है एग्जाम जिस दिन आपको देना है तब आप दीजिए, आज देना आज दीजिए। इन सीमा देयर इज नो डेट फॉर एग्जाम, व्हेन यू आर रेडी गिव द एग्जाम, ठीक है। तो इसलिए पहला डिफरेंस है कि यू डोंट हैव टू ट्रेवल एनीवेयर। हर एक लेवल पे कंप्लीट करने से यू विल बी गेटिंग डिग्रीज अवार्ड्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। हो सकता है कोई कॉर्पोरेट इंडिया में बोले हम नहीं जानते हैं, तो उनसे ही दुनिया नहीं बनती है, दुनिया पूरी ग्लोबल से बनती है। उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ऑलवेज डिमांड है। तीसरा है सीमा में, अभी मैं आऊंगा, अलग अलग पर्संस के लिए अलग अलग एंट्री लेवल है कि आपने अगर कुछ क्वालिफिकेशन अर्न किया है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन भी, यू विल बी गिवन सम एग्जाम्पशंस, बिकॉज जो चीज आपने पढ़ लिया वो वापस आपको पढ़ाया जाए, बोर किया जाए, दैट सीमा डजंट फील दैट, सो दैट यू नो दैट इज एग्जाम फॉर यू। सो किसके लिए क्या क्या एग्जाम्पशंस है, वी विल कम, विच इज नॉट देयर इन एनी कोर्स एक्सेप्ट सीमा। देन जॉब्स नॉट लोकली, ग्लोबली अगर जॉब चाहिए, सीमा विल प्रोवाइड दैट एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरीबडी सिटिंग हियर फॉर गेटिंग जॉब ओनली, अपने को अपना बिजनेस को भी ग्रो करना है। सो कैसे बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वी लर्न थ्रू सीमा सिलेबस। ये 5 पेपर्स है जिनको अपने बोलते हैं सर्टिफिकेट इन बिजनेस अकाउंटिंग। ये 5 पेपर केवल उनको देना पड़ता है जो लोग ग्रेजुएट भी नहीं है। इफ यू आर अ ग्रेजुएट देन दीज 5 पेपर्स आर एग्जम्प्ट। जितने भी जन बैठे मेरे ख्याल से ज्यादातर यहां सभी ग्रेजुएट हैं, यानी कि उन सब के लिए 5 पेपर एग्जम्प्ट। ये है क्या, सिंपल भाषा में बोले, इंडियन कोर्सेस में जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो फाउंडेशन लेवल वाला कोर्स है, और सीमा ऐसा मानता है कि सिंस यू आर ग्रेजुएट, आपका ये बेसिक नॉलेज पूरा हो चुका है, आपको ये वापस से नहीं पढ़ना है। सो इफ यू आर अ ग्रेजुएट, आउट ऑफ 17 these 5 papers are exempt. You don't have to give exams for these 5 papers. Now ये 5 पेपर के बाद सीमा में जो आपके पास माने लीफलेट्स है, हाँ, उसमें माने हमने लीफलेट्स तो एक दिया ही है, उसके साथ में जिसके लिए जो रेलिवेंट है, सामने देखेंगे कि पोस्टर लगा हुआ है, तो जाने के टाइम पे क्लिक अ फोटो ऑफ दैट सो दैट यू विल हैव कि हमारे लिए ये रेलिवेंट है। If you are a graduate, if you are a 10+2, if you are a CA inter, if you are a CA finalist, if you have passed CA final, if you are a CMA member, for different persons, different perspective are there. लेकिन मैं एक बार समराइज कर रहा हूं कि सीमा में ये 3 पिलर्स हैं, एंटरप्राइज पिलर, परफॉर्मेंस पिलर, फाइनेंशियल पिलर। एंटरप्राइज पिलर नॉर्मली अपने MBA कोर्सेस में पढ़ते हैं, बट सीमा इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोफेशनल डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस एज वेल एज MBA कोर्सेस। इसके अंदर वी स्टडी बेसिकली हाउ टू मेक स्ट्रैटेजीज टू ग्रो आवर बिजनेस, हाउ टू अप्लाई मार्केटिंग स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स, अलग टाइप का स्किल्स जो कि इंडियन कोर्सेस में कवर नहीं करते, वो यहां आता है। उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज पिलर। तो कुछ स्टूडेंट ने आपने सुना होगा अभी E1 में फर्स्ट रैंक लाया, जो लोग बैठे हैं उनको बहुत समझ में आ रहा है, वो लोग इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। देन परफॉर्मेंस पिलर। परफॉर्मेंस मतलब अभी हम लोग परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड ही दे रहे थे कि दे गेव द एग्जाम, दे गॉट द रैंक, दे वर रिवॉर्डेड। सो अगर आपका कोई टारगेट है, आपने वो टारगेट मीट किया कि नहीं, कहां पर आप हैं, कितना पीछे हैं, आपको आगे और क्या करना है जिससे कि आपका टारगेट अचीव हो पाए। वॉट एवर वी अचीव वी आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। कुछ भी मिल जाए लगता है कम ही मिला। मेरे को लगता था कि मेरे को 2 से 100 जन को पढ़ाना है सीमा। नाउ आई एम ऑलरेडी 200 बट नाउ वांट 10 मोर 2000। चाहे इंडिया में कोलकाता में मिले नहीं मिले, बट टारगेट यही है कि नाउ वी हैव टू पुट अ 0 देयर। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो भी टारगेट आपका है, आपने अगर वो अचीव किया, क्या क्या माने यूएसपी था जो आपने टारगेट अचीव किया और कहां कहां प्रॉब्लम हो गई,
हाउ यू कैन इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस दिस सब्जेक्ट डील्स। अगर सिंपल भाषा में बोले तो बहुत लोग इंडियन कोर्सेज के जैसे इसको कॉस्टिंग बोलते हैं। मेरे को सीमा भी किसी से भी जब बात करते हैं नॉर्मली, जिसको नहीं मालूम है, सर ये तो कॉस्टिंग है ना। सर यहां कहां कॉस्टिंग है, केवल कॉस्टिंग यहां है, और वो भी बहुत डिफरेंट टाइप है, इंडियन कोर्सेज से अलग है। इट्स अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इट इज नॉट कॉस्टिंग। सो जो लोग यहां बैठे प्लीज ये मत बोलना कि सर सीमा मतलब कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग नहीं है सीमा मतलब, इट्स अ डिफरेंट थिंग। दिस इज परफॉर्मेंस पिलर। देन फाइनेंशियल पिलर के अंदर है पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, फुल IFRS। आप हर जगह सुनते होंगे, मैं सुनता हूं KPMG में, डेलॉयट में IFRS का कोर्स हो रहा है 10 डेज का, फीस है 80,000, 1 लाख, 1,20,000। व्हाट यू स्टडीड इन 10 डेज, क्या होगा सोचिए एक बार। जब हम लोग पूरा अकाउंट CMA पढ़ते हैं 3 साल तो भी बाकी रह जाता है, तो व्हाट वी स्टडीड इन 10 डेज, वो बोलने का बात है। इट्स जस्ट देयर प्रमोशन की भाई दे वांट टू गेट गुड ऑडिट्स, फॉर दैट रीजन दे हैव टू प्रमोट कि देखिए हम लोग IFRS का ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट वो ट्रेनिंग 10 दिन में नहीं हो सकता है। सो दैट फाइनेंशियल इंक्लूड्स IFRS एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल पिलर के अंदर IFRS और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर किया गया। अब ये जो 3 पिलर है, पिलर मतलब क्या, द थिंग विच यू विल स्टडी हियर, सेम थिंग यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेवल ऑल्सो। इन तीनों को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल, फिर यहां मैनेजमेंट लेवल, फिर ये स्ट्रैटेजिक लेवल। सिंपल में अपने कोई इंडियन कोर्सेस में अकाउंट्स बार बार पढ़ते रहते हैं, कुछ सिलेबस यहां, फिर कुछ आगे, फिर और आगे। वैसे ही ये भी है, यहां पर लोअर स्किल चाहिए, यहां मीडियम स्किल चाहिए, यहां हाईएस्ट स्किल चाहिए। अभी जो 2015 में नया एडिशन हुआ है वो क्या है, इन तीनों के बाद आपको हर लेवल में केस स्टडी एग्जाम देना है, विच इज USP ऑफ दिस कोर्स। कि आप एग्जाम दे लिए, बुक पढ़ लिए, पास हो गए, बिजनेस चलाना आता है कि नहीं। बुक का तो बात हो गया, यू नो द नॉलेज, ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द लर्निंग आउटकम्स यू नो, बट इफ यू डोंट अप्लाई दैट इन योर बिजनेस तो उसका क्या फायदा होगा। तो सीमा टीच कैसे बिजनेस में अप्लाई करने। बहुत बार जब मैं इंडियन कोर्सेज पढ़ाता हूं तो मेरे को जोश आ जाता है, तो मैं ये सब बोलने लग जाता हूं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कहीं तो निकलेगा ना वो। सो आई स्टार्ट सेइंग दिस, बट अभी तो ये बोलना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट के बाद आपको उसका बिजनेस एप्लीकेशन समझना है। हाउ यू कैन अप्लाई दैट इन बिजनेस विच इज नॉट देयर इन एनी कोर्स। वो यहां पर सब में अलग अलग लेवल पे है। ऑपरेशनल लेवल में केस स्टडी, मैनेजमेंट लेवल में केस स्टडी, स्ट्रेटेजिक लेवल में केस स्टडी, which is a 25 to 30 pages write up about a dummy company। ऐसा आप किसी से भी कोरिलेट कर, मान लो they are saying about power company, you can correlate with Tata Power or anybody। like अभी तीनों अलग अलग लेवल पे केस स्टडी क्या चल रहे हैं। यहां पर एक केस स्टडी FMCG कंपनी, यहां पर एक केस स्टडी है FMCG बोलेंगे बट थोड़ा डिफरेंट टाइप। यहां पर केस स्टडी है फुटबॉल, सॉकर, बहुत बड़ा गेम है, इंडिया में क्रिकेट चलता है, लेकिन यू नो दैट फुटबॉल इज ए डिफरेंट लीग। सो अलग अलग लेवल पे अलग अलग केस स्टडी है। एक टीचर को 4 बार एग्जाम होता है ये सबका, 4 बार 3-3 केस स्टडी, 12 केस स्टडी प्रिपेयर करना, 25 पेजेस इंडस्ट्री एनालिसिस, इट्स अ चैलेंज। मैंने आज समझ लीजिए, मैं बहुत बार स्टूडेंट लोग के साथ शेयर करता हूं कि आई हैव अ किड 2 years old, 2 years 3 months। बहुत बार ये होता है पढ़ने नहीं देता, पढ़ना है, ही इज नॉट अलाउइंग मी टू स्टडी, आई हैव टू गेट अप एट 4 o'clock, स्टडी एंड देन गिव द क्लास। दैट अगर मेरे में है तो आप में क्यों नहीं है। बोलेगा सर आपके पास तो पैसा आ रहा है, आपको चाहिए कि नहीं फ्यूचर में, मेरे पास आ रहा है, बट इफ यू वांट यू हैव टू डू दैट ना। आपको भी 4 बजे उठना है, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ता है। इट्स नॉट दैट कि बुकिस हो गया, ये सब बुकिस है, बट केस स्टडी एवरी टाइम, एवरी 3 months इज अ डिफरेंट चैलेंज। और जो स्टूडेंट भी पढ़ते हैं उनके लिए भी चैलेंज है कि कैसे बिजनेस में उसको अप्लाई करना है अदर देन पेपर। तो ऑपरेशनल लेवल, मैनेजमेंट लेवल, स्ट्रैटेजिक लेवल, 3 अलग अलग लेवल है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, तो आपको ये सारे 12 पेपर देने हैं। 3+1 ऑपरेशनल लेवल में, 3+1 मैनेजमेंट लेवल में, 3+1 स्ट्रैटेजिक लेवल में। 12 पेपर्स एग्जाम्स यू नीड टू गिव फॉर एनी पर्सन हु इज जस्ट ग्रेजुएट, जिसका और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कितने दिनों में होएगा, क्या खर्चा लगेगा, वो मैं आ रहा हूं अभी। देन दीज बेसिकली कहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सीमा ने किसके साथ कोलैबोरेशन की है, वो आंसर अगर शेयर करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए आई एम स्कीपिंग दैट।
नाउ एक बार जस्ट मैंने स्लाइड बनाया है कि एक पर्सन अगर 10+2 पास किया हुआ है, ग्रेजुएट भी नहीं है, तो उसको 5 पेपर सीबीए वाला भी देना है और 12 पेपर भी देने हैं, 17। वो 17 पेपर्स का टोटल फीस उसका लगेगा 1,61,600। दिस इज एज ऑन टुडे, वॉट एवर द फीस अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1 pound इज इंटू 100। नाउ द पाउंड वैल्यू मे गो अप, मे गो डाउन, एंड द फीस मे चेंज इन 6 months, 1 year horizon। इसलिए ये सब कंडीशन यहां लिखा हुआ है, अदरवाइज somebody will challenge, इतना बोले थे बेसिक कैसे, फॉर दैट रीजन। ठीक है, 1,1616 pound फॉर द टाइम बिंग है। 100 अभी पाउंड का वैल्यू है नहीं वैसे, इट्स रनिंग एट 93, तो कमती है। ये टोटल फीस है जो शुरू से चालू करेगा, फ्रॉम द इनिशियल, कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। 10+2 पास करने के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपका ये टोटल एक्सपेंडिचर्स है। नाउ मैंने अलग से 10+2 के लिए एक स्लाइड बनाया है, वहां पर बाहर भी लगा हुआ है। जो लोग का ग्रेजुएशन नहीं हुआ है वो लोग जाने के टाइम पे फोटो क्लिक कर लेंगे। इसमें लिखा हुआ है सीबीए लेवल यू कैन कंप्लीट इन 6 months इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। आई एम नॉट सेइंग सुपर फास्ट। और जो लोग ऑलरेडी सीबीए से कर रहे हैं उनको ये फीलिंग होगा कि 6 महीना में इजिली ये किया जा सकता है। नॉट दैट आई एम स्टैंडिंग हियर सेइंग दैट, बट जो भी यहाँ मेरे स्टूडेंट है उन लोगों को ये फीलिंग है कि दे कैन इजिली कंपेयर दे, माने कंप्लीट दिस इन 6 months। एनी इंडियन कोर्सेस में वो संभव नहीं हो सकता है सीपीटी नहीं हो, ये जरूर हो जाएगा 6 महीना में, ये जरूर हो जाएगा विथ प्रॉपर गाइडेंस। देन ऑपरेशनल लेवल का जो 4 पेपर है, P1, E1, F1 एंड द केस स्टडी, दैट कैन ऑल्सो बी कंप्लीटेड इन प्रॉपर डिजाइन फॉर्म में 6 महीने में। मैं ऐसा मानता हूं जब नया सिलेबस चालू हुआ है, अगर आपने एक बिकॉज एग्जाम्स यहां पर कोई भी सब्जेक्ट का हर दिन हो रहे हैं, आप आज रेडी हो, आज एग्जाम दो। आपने एग्जाम बुक कर लिया, बाई चांस आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है नहीं देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लो। प्योर फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग गिविंग द एग्जाम्स, यानी कि आपका फीस वेस्ट नहीं होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के एग्जाम देते हो, पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। जो एग्जाम्स है आई टीच, मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक सब्जेक्ट 30 to 40 डेज का टारगेट रखता हूं, कोई में 45 डेज भी लग जाता है। इफ वी टेक अ मैक्सिमम विंडो ऑफ 45 डेज, तो 3 सब्जेक्ट करने में 45 into 3 135 डेज लगता है। और केस स्टडी बैलेंस 180 - 135 इजिली हो सकता है, बिकॉज उसके पहले केस स्टडी का मटेरियल आउट ही नहीं होता है, तो स्टडी चालू करेंगे। इसलिए 6 महीना में इजिली हो सकता है अगर अपने चाहें तो हर एक लेवल, फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, नॉट अबव एवरेज, फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट कैन कंप्लीट सीबीए, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक लेवल, ऑल इन 6 months, दैट इज 2 years। हर बार जब अभी नया साल चालू होता है, बच्चे लोग ग्रेजुएशन में ज्वाइन करते हैं कॉलेजेस वगैरह में, तो यहां पर राउंड अबाउट 15-20 स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं सीबीए से। उस 15 में से 20 में से 50% लोग आगे निकल जाते हैं 6 महीने में। कुछ 50% ऐसे होते हैं जो मान लीजिए 6 नहीं 8-9 महीने लगा दिए, अब जो बच गया 4-5 उसको करना ही नहीं है। ठीक है, उनके लिए नहीं है, उनको खाली नौटंकी करना है, पढ़ना भी नहीं है, खाली यही, कोई फायदा नहीं उनका। इसलिए आई एम सेइंग एवरेज मींस एटलीस्ट जो 8-9 महीने में भी कर ले, बिकॉज आपको गोद में बैठा के झूला झूला के पढ़ाया जा रहा है, एंड स्टिल यू आर नॉट पासिंग, इट्स प्रॉब्लम ऑन योर साइड, नॉट ऑन द टीचर साइड। बट फिर भी सोचते हैं भैया कैसे भी पास हो जाए, वो तो सुनते नहीं है बात। तो बोलने का मतलब वो 4 अलग अलग है, सबको 6 महीना में 2 साल। लेकिन मैं आते ही क्या बोलता हूं, आप ये मान के चलो 3 साल में होगा ग्रेजुएशन। जब तक आप करेंगे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल में हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ फंक्शन हो गया, कुछ लेट हो सकता है, तो 3 साल में इजिली अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन यू कैन कंप्लीट द कोर्स। यहां मैंने फीस लिख के रखा है कि इंस्टीट्यूट का फीस क्या है और हमारी फीस क्या है, सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर इज कमिंग 3,20,000। 3,20,000, 5%, 10% इधर उधर समझना पड़ेगा, बिकॉज इट इज टुडे, मे बी इंस्टीट्यूट विल इंक्रीज सम फीस व्हाटएवर। अपने ऐसा मान के चलते हैं 3 साल में 3,60,000, मैं ऐसा बोलता हूं। पेरेंट्स लोग आते हैं बिकॉज जनरली 10+2 का बच्चा अकेले नहीं आता है, साथ में मम्मी पापा सब आते हैं। कल आए थे मम्मी पापा भाई बहन सब, पूरा फैमिली, एवरीबडी इज देयर। तो सबको समझाना पड़ता है कि भाई 3,60,000 36 महीना पर मंथ कितना 10,000 रुपया। टेक इन दैट वे, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। कि अगर आप सीरियस हैं, 2 से 3 घंटा पढ़ने के लिए रेडी हैं,
ग्लोबल कैरियर चाहिए, अपॉर्चुनिटीज आपके पास, ग्रेजुएशन के साथ आप 3,60,000 रुपया खर्चा करके कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. देन फॉर ग्रेजुएट, सिंस फर्स्ट CBA लेवल इज एग्जम्प्ट, यानी कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक, ऑल द 3-6 months is the normal time which will require. This is the fees. ग्रेजुएट वाले को 1,49,500 करीब इंस्टीट्यूट को देना है और हमारी फीस 135 है. सो द टोटल कम्स टू 2,80,90,000. दैट कैन बी कंप्लीटेड इन 1.5 year. टेक अ 6 months एक्स्ट्रा फॉर एनी फैमिली फंक्शन, 2 साल में हो जाएगा मैक्सिमम. हम तो सीरियसली बोल रहे हैं यार. फिर इफ यू आर अ CA इंटर, अगर आपका CA इंटर हो चुका है, CA इंटर हो चुका है, तो आपको ऑपरेशनल लेवल में 3 पेपर मैंने अभी बोला था, E1, P1, F1. आपको P1, F1 नहीं देना है, बिकॉज CA इंटर वाले का इतना नॉलेज है कि वो P1 और F1 पढ़ चुका है. तो उसको केवल E1 और केस स्टडी एग्जाम देना है, विच कैन बी कंप्लीटेड इन 3 months. मेरे पास स्टूडेंट है, सी इज कंप्लीटिंग इन 3 months. अभी उन्होंने ज्वाइन किया 1.5 month, yesterday she completed E1 and I am very confident that she will complete case study also. So इसलिए 3 months में ये स्टूडेंट क्लियर कर रहे हैं, then why not others? Why not? अगर एक जन है तो सब जन क्यों नहीं, उसमें क्यों दम है, वो भी तो मेरे से ही ट्यूशन ले रहा है, पैसा उतना ही दिए. Then why she is getting the reward, I am not getting? हम ऐसे कम क्यों है, ऐसे मन में सोचना होगा ना. I have to also go forward. इसलिए 3 महीना में आप वो करिए, फिर 6-6 महीना में मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक. मेरे लिए एक चैलेंज होता है कि उनको पास कराना है, उनके लिए चैलेंज नहीं है. हमको दिखाना है कि सी कंप्लीटेड इन 1.25 years CIMA सिलेबस and she is placed there, which I can show कि she is now here, now you want to become like that or not, that I want to show. कि इसलिए उनके लिए भी चैलेंज है, मेरे लिए भी है कि उनको पास कराना है anyhow, कि वो पास हो जाए 1.25 साल के अंदर, और इजीली हो सकता है. खर्चा उनका पड़ेगा 1,45,500 इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा, 1,17,000 हमारी फीस है, 2,50,000 से 60,000 रुपए खर्चा लगेगा. कैन बी कंप्लीटेड, वी टेक 3 months मोर, 1.5 year में इजीली हो जाएगा. इफ यू आर अ CA, CMA, MBA, MCOM, CA क्वालिफाइड, CMA क्वालिफाइड, MBA, MCOM, देन इन दैट केस आपको ऑपरेशनल लेवल का कोई पेपर नहीं देना है, मैनेजमेंट लेवल का कोई पेपर नहीं देना है. मैनेजमेंट लेवल सीधा केस स्टडी, मैनेजमेंट लेवल सीधा केस स्टडी, मैनेजमेंट लेवल केस स्टडी. यानी कितना पेपर एग्जामिशन हुआ, CBA वाला 5, ऑपरेशनल लेवल का 4 और मैनेजमेंट लेवल 3. हाउ मेनी? जितना पेपर एग्जामिशन हुआ बैलेंस 5 बचा, तो केस स्टडी का एग्जाम आप देंगे. दिस केस स्टडी इज नॉट सिंपल. एग्जामिशन मिल रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन पढ़ने अच्छे से पड़ेगा, बिकॉज जो सिलेबस हम लोग को स्किप कर रहे हैं एग्जाम से, उसके ऊपर ये केस स्टडी बेस्ड है. इसलिए 6 महीना करीब लगता है एवरेज स्टूडेंट को, लेकिन जो C है वो ऑलरेडी बियॉन्ड एवरेज है, इसलिए वो इजीली पास कर सकते हैं. थोड़ा सा कमिटमेंट चाहिए कि भाई जॉब के साथ मेरे को 1.5 से 2 घंटा डेली पढ़ना है, और इतना टाइम मेरे को मिलता है, आपको भी मिलता होगा कि 1.5 से 2 घंटा जॉब के साथ हमको कंप्लीट करना है 6 महीने में. एंड देन स्ट्रेटेजिक लेवल 4 पेपर्स वी कैन कंप्लीट इन 6 months. 1 year में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और अपने को ग्लोबली 4 डिग्री मिलेगी, जिसके बारे में बाद में आऊंगा. 1 साल में फॉर CA के लिए द एक्सपेंडिचर टू द इंस्टीट्यूट 92, आवर फीस इज 95, टोटली 1,80,000 अराउंड. 1 year में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. दोज हु आर चार्टेड अकाउंटेंट, एंड योर ग्लोबल पोर्टेबिलिटी विल इंक्रीज. अगर आपके मन में इच्छा है दुबई, सिंगापुर, ये सब जगह जाने की इच्छा है, देन इन दैट केस दिस कोर्स इज वेरी रिनाउंड, दैट यू सर्च ऑन योर ओन. आप अपनी तरफ से लेवल पे सर्च करिए, आपको पता चलेगा. इफ यू आर अ CA, CMA, MBA एंड MCOM, then this is a new development in last 2-3 months. if you are a CMA member, अगर आप CMA member है, CMA क्वालिफिकेशन और CMA member अलग है. You are a member of the institute of CMA, आपने पास भी किया और member बन गए, then in that case only 1 paper. ऑपरेशनल, CBA, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक सब एग्जाम्ड, केवल स्ट्रेटेजिक केस स्टडी, ओनली 1 पेपर केस स्टडी. केवल केस स्टडी का एग्जाम देना है. सिंस यू आर गेटिंग मोस्ट ऑफ द पेपर एग्जामिशन, पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा थोड़ा. जो अलग अलग सब्जेक्ट एग्जामिशन मिले, दैट वी हैव टू स्टडी, देन 6 months में क्लियर हो जाएगा. इंस्टीट्यूट इज चार्जिंग दिस, वी आर चार्जिंग दिस, द टोटल एक्सपेंडिचर इज 90,000. मैंने एक नॉर्मली सबको लेकर कवरेज बना दिया कि 10+2 के लिए कितना साल लगेगा, टाइम कितना लगेगा, खर्चा कितना होगा. फॉर डिफरेंट लेवल्स वी हैव मेड दिस. नाउ
अगर अपनी सीमा कंप्लीट करते हैं तो अपने को सीमा डिग्री ACMA तो मिलेगा ही. वंस वी बिकम मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वी विल बी गेटिंग CGMA, चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फ्रॉम दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम बोथ द इंस्टीट्यूट CIMA एज वेल एज AICPA US. दोनों इंस्टीट्यूट का कोलैबोरेशन हुआ है लास्ट 2 years बैक, और वो दोनों इंस्टीट्यूट एक साथ, AICPA US का नाम सुना है आप लोगों ने, और CIMA सुन ही रहे हैं. दोनों से मिला के both institute join hand and you will be getting CGMA, chartered global management accountant, and you will be getting CMA from Canada and Australian CPA. CMA from Canada और Australian CPA वो भी डिग्री उनका टाई अप है, आपको वो डिग्री मिलेगी. यानी कि you do CIMA you will be getting 4 degrees, 4 डिग्री आपको मिलेगी. और डिग्री तो बात की बात है, जो नॉलेज होगा वो सुप्रीम है. जो नॉलेज होगा आप हर एक कॉर्पोरेट के लिए रेडी प्रोडक्ट. Not that you need to learn anything else. You were ready for the industry set. आप इंडस्ट्री में जाकर इंडस्ट्री का अलग तरह से हेल्प कर सकते हैं, कॉर्पोरेट में अलग तरह से हेल्प कर सकते हैं, जो यू कैन फील वंस यू डू द कोर्स. दैट डिफरेंस द कोर्स विल मेक. जस्ट अ बुकिश स्टडी, उसके अलावा एक अलग तरह का स्टडी जो हमारे कोर्स में हम लोग को हेल्प करे. नाउ जैसे ही खत्म होगा सब कोई जनरली क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं पहले ही जवाब देना चाह रहा हूं. कोई जन बोलेगा भैया मेरा तो CA एक ही ग्रुप बाकी है. कोई बोलेगा भैया मेरा CMA फाइनल हो गया है, मेंबरशिप बाकी है. बोलेगा ऐसा क्वेश्चन मन में ऑलरेडी चालू हो गया होगा. क्वेश्चन आंसर सेशन वी विल बी गोइंग लेटर ऑन. एक बार आंसर बोल लेते हैं. मेरा ये बोलने का मतलब है कि आपको ये अपने आप एनालिसिस करना है कि मान लीजिए आपको इंडियन कोर्स कर रहे हैं, 4 या 5 बार प्लंग कर चुके, खराब बात है बट हो गया, तो अब आपको पढ़ पढ़ के बोर तो हो गए होंगे. क्या पढ़े? और there are many who have given CA inter or final exams or CMA many times, नहीं क्लिक हुआ. अच्छा पढ़े थे, स्टडी पूरा हार्डवर्क किए थे, लेकिन नहीं क्लिक हुआ. अब वो मन में, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं हर समय जब रिजल्ट आता है, भैया 5 बार हो गया. एक जन आया, उसकी मम्मी भी साथ में बेचारे की आई, भैया 7 बार हो चुका है, अभी क्या पढ़े. तो मेरा ये बोलने का मतलब है आप वो चीज वापस 6 महीना पढ़ोगे, कितना एफर्ट्स दे पाओगे, दैट यू हैव टू थिंक. वन इज दिस एरिया. सेकेंड इज, अगर आपका एग्जाम्स अभी ड्यू नहीं है, आपका CA इंटरव्यू फाइनल 2-3 साल बाद है, देन इन दैट केस इट्स अ लॉन्ग जर्नी लेफ्ट. देन इन दैट केस यू शुड बी ज्वाइनिंग द कोर्स नाउ. हाँ, ये अगर है कि आपका 6 महीना बाद ही CA फाइनल होने वाला है, CMA फाइनल होने वाला है, 6 महीना बाद ही ड्यू है, देन यू शुड वेट फॉर 6 months. गिव योर बेस्ट शॉट इन दैट सो दैट यू विल गेट एग्जाम्शन. बट अगर 1-1.5-2 साल बाकी है, उतना देर में तो ये कंप्लीट हो जाएगा, उसका डबल बेनिफिट मिलेगा. एक तो आपका इंडियन कोर्स हो ही रहा है, और साथ में आप इस कोर्स के बेनिफिट पे, इस कोर्स के बेसिस पे अपने इंडियन कोर्सेस में भी अच्छा नंबर उठा पाओगे. यू विल बी एबल टू स्कोर रैंक. तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा. ग्लोबल क्वालिफिकेशन भी मिल रहा है, ये कोर्स भी हो गया, और साथ में ग्लोबल पोर्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया. सो दैट यू नीड टू डिसाइड. नोबडी विल से यू कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन आपको अपने लेवल को एनालाइज करना है और सोचना है मेरे को क्या करना है. whether I should do or not, that you need to decide. But इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है कि मेरा एक ग्रुप हुआ है, एक नहीं हुआ है, ये होने वाला है. इट्स डिफरेंट. फिर इन दैट केस यू कैन कम फॉर काउंसलिंग 10 to 12 o'clock or 4 to 6 o'clock any day except Sunday. 10 to 12, 4 to 6. गिव योर प्रॉब्लम. आप अपना प्रॉब्लम लेके आइए, आपके साथ 1-to-1 बैठ के बात करेंगे. लेकिन इस चीज का ऐसे जनरली आंसर देना बहुत मुश्किल है कि मैं यहां हूं, क्या करना चाहिए. दैट यू नीड टू डिसाइड. ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर हो, एक बार थोड़ा देर रुक जाइए, 15-20 मिनट. सर बोल लेते हैं, सर समझा देते हैं कि व्हाट CIMA इज डूइंग. यू विल बी गेटिंग बिग राउंड, बिग opportunities for CIMA. क्या क्या CIMA इंस्टीट्यूट कर रहे हैं. सो व्हेन ही विल बी स्पीकिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर. तो एक बार मैं उनको माइक दे रहा हूं, लेट हिम कम. My first question is it necessary to use the mic? If I want to go off the record? I just try to address